फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पास्ता बनाने का सामान, और इसमें है टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज, शिमला मिर्च, पास्ता मसाला और पास्ता उबालने के लिए पानी। तो गाइस, कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें पानी डाल देंगे। तो गाइस, कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें पानी डाल देते हैं। गाइस, एक गिलास पानी और लगेगा। तेल डाल दिया, थोड़ा सा नमक। चिपके ना। तो गाइस, ये बस 5 मिनट में उबल जाएगा, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, पास्ता बन चुका है, उबल चुका है, मतलब सॉरी। चलिए इसके पानी को छान करके और पास्ता बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल डाल दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालिएगा। इसका तेल गर्म होने दीजिए। जब तक लाल नहीं हो जाता है तब तक इसको भूनते रहिए। और आप टमाटर डाल दें, अब मैं टमाटर डाल रहा हूँ। शिमला मिर्च, तो गाइस, अब इसमें हम पास्ता डालेंगे।